अभी हम गए तो नहीं हैं, फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि मुंबई में कमाई अच्छी होगी, इस वजह से आदमी प्रदेश छोड़ता है। हाँ चले जाब, कोई बहुत जरूरी पड़ जाए तो चले जाब, नहीं तो घर में रही बा। जब जाएंगे वहाँ जाए तो अच्छा लगी। जैसा भी मिल जाए, रहने वाला मिल जाए तब भी चले जाएंगे, और टेम्परेरी मिलेगा तब भी चले जाएंगे। कि 2 पैसे कमाने मैं शहर आया, गांव भुला के शहर भटकने आया। न सर पे छत न जेब में रुपया, ए शहर तेरी भीड़ का मैं हिस्सा बनने आया। भटकता गली गली मैं वो ख्वाब खरीदने आया। ए शहर इस बेगानी बस्ती में मैं घर बसाने चला आया। कितनों को तूने पाला है, मुझे भी पाल लेना, कोने में किसी मुझे भी पनाह दे दे। जब खाली होगा मकान मेरा तो उस मज़ाहिर को दे देना, आखिर वो भी तो 2 पैसे कमाने शहर आया होगा। आखिर वो भी तो 2 पैसे कमाने शहर आया। Now what led to this arrest? अभियान में आज बार फिर रेशम राजनीति की politics of hate, believe it or not, now targeting school children. See, migrant workers is a term used recently, but it is a phenomenon which has emerged from civilization, when people started moving from one place to another place for livelihood. But that was 5,000 years back. Now, 1970 or so, it was realized that in India, the different states, different regions are economically different at different level. Bihar and Uttar Pradesh have always attracted through the chain migration, we call it. Now the chain migration has also shifted from chain migration to network migration and friends migrations. If you remember the term given by Ashish Bose, a famous population expert, that is Bimaru states. Bimaru states means Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh. These are the almost 40% of people live in these places, and the population is very high, and the indicators like in terms of health, in terms of infant mortality rate, if you look at all these indicators, they are really doing not well. Well, any migrant coming to a city will undergo several challenges. So normally when we are talking about migration, there are always a push factor, there is always a pull factor. What is happening is, as of now, there is a lot of push factor happening, that in the rural areas there are lesser economic opportunities, lesser avenues for education for the children, less health access. So thereby then people look for greener pastures, they would like to come to a city. मेरा नाम रंजय गोंड है, मेरे पिताजी का नाम बुधिराम गोंड है। मैं लगभग 2002 में आया था यहाँ पे मुंबई में। देखिए, देखा जाए तो मैं पढ़ाई के लिए तो नहीं, मैं नौकरी के हिसाब से ही आया था, घूमने आया था फिलहाल तो। टाइम पे उम्र बहुत कम थी, लगभग 16-17 साल के आसपास। मेरा नाम गुंजन कुमार, मैं बिहार से हूँ, बेगूसराय से। मैं खाना बनाने का काम करता हूँ मुंबई में। मेरे फैमिली प्रॉब्लम थी, इसके लिए मैं मुंबई आया। मेरा मतलब मम्मी पापा काम नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं था पीछे अपना, तो इस हिसाब से मैं करते करते अपना कुकिंग का काम मेरे को सीख गया, तो मैं ये करने लगा। But having displaced themselves and coming to a new city, they will encounter a lot of challenges. It can start with cultural shocks, cultural challenges. It can be about finding a space for themselves, spatial challenges. It could be about coping with the busyness of a city which they may not be acclimatized. बाहर में सुना था मुंबई में बहुत सारे लोग जा कर के अच्छा कमाते हैं, खाते पीते हैं, अच्छा रहते हैं। उसी हिसाब से हम भी आए, चलो देखते हैं मुंबई में क्या है। इधर आया तो बहुत तकलीफ भी हुई,
काम मतलब संघर्ष बहुत करना पड़ा, दिन रात 1 बजे 2 बजे रात तक मुंबई में काम करते रहा, तभी सब ठीक है, मतलब बहुत तकलीफ थी। The main important point is that when the agricultural productivity is not helping you, and because of this kind of low agricultural productivity and people again exposed to the modern forces, modern lifestyle. So even the people who are in the villages, they have high school or dropouts. They don't want to enter into agricultural field. Rather, they'll spend they are more interested in moving to other places. जी, मेरा गांव का नाम रामनगर है, पोस्ट मुशेरी बाज़ार लगता है, गोपालगंज ज़िला लगता है, बिहार राज्य से। देखा जाए तो गांव में जैसे नॉर्मली जब से सबका गांव में जो घर था, झोपड़े का घर था वो टाइम पे गांव में कुछ ज़्यादा मजदूरी नहीं थी। देखा जाए तो दिन का कुछ 20 रुपये मिलता था, 15 या 20 रुपये मजदूरी थी, जितना मुझे ध्यान में है। दिन भर आदमी धान रोपे, गेहूँ काटे या धान की क्या बोलते हैं उसमें से कचरा निकाले, सोहिया बोलते हैं गांव में उसका। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, रोज़गार के हिसाब से आना चाहते हैं। अभी भी गांव में कुछ खास रोज़गार नहीं है जो गांव में कर सके। पैसे कमाने के लिए आदमी आता है जो अपना पेट पाल सके, अपना पाल सके। यदि कुंवारा हो तो अपने माँ बाप का, भाई बहन का, ये सबको देख सके, और शादीशुदा हो तो अपने बीवी बच्चों के लिए, प्लस माँ बाप तो सब साथ में रहते ही हैं, तो घर अपना अच्छे से कुशल पूर्वक चला सके उसी हिसाब से। Migration to Bombay has gone even very high. Once was a situation that migrant were the maximum. Now it has reduced to maybe around 35% or like that. So that was always a kind of question about migrant, or blame that they snatch non-migrant work. ऐसा कभी मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हूँ किसी का घर में, तो ज़्यादा काम करने का जैसा क्या बोलता है, नहीं तुम इतना रेट से नहीं कर सकती है, हम लोग कितना पैसा लेता है तो इतना कम से करेगा तो तेरे बिल्डिंग से हटाएगा। ऐसा मराठी लोग ज़्यादा बोलता है। मराठी लोगों में बोलता है जी नहीं, ऐसा रेट से अगर काम कर रहा है, बंगाली लोग पूरा ख़राब कर देता है, सोसाइटी में बिल्डिंग ख़राब कर देता है, इतना कम रेट से काम कर रहा हो, इतना काम ऐसा करता है तो इसका हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। ऐसा करके कुछ दिन मेरा इंटरव्यू भी बन गया था भैया। Like this faction of the Shiv Sena. So now that time Raj Thackeray. What Raj Thackeray wanted to do? Nothing. What this Shiv Sena also wanted to do? Lot of money they earn for the local people. Their purpose was they will provide the employment to the Maharashtrian youth. Did they do it? No. Raj Thackeray also he started. कहीं पे 2-4 लोगों को, टैक्सी वाले को, मतलब you just beat them. So many people they get the fear. टैक्सी चलाते 10 साल हो गया। मेरा नंदलाल मिश्रा नाम है। मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ। मेरे पिताजी बाबू बहुत पहले आ गए थे, मतलब 60 साल 70 साल के ऊपर हो गया। मराठी लोग बहुत तंग करते हैं, वो सोचते हैं कि ये उनका ही है और यह है भारत में, यहाँ सबका हक है, सबको रहना चाहिए, सबको देना चाहिए रहने के लिए। ये हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र कहाँ, हिंदुस्तान में ही है ना। इनको अपनाना चाहिए, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमारे राज्य में इतने लोग आए, इनको और कदर करना चाहिए, इनको एक रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं करते हैं। ये तो सोचते हैं कि ये तो भैया है ना, यूपी से आया है, ऐसा बोलते हैं, तो ये गलत है। तिकडच्या लोकांनी तिकडेच थांबून तिथेच रोजगार त्यांना दिला पाहिजे ना। त्यांनी मुंबईत का यायचं याची गरज नाही। अनेक ठिकाणी किती उत्तर प्रदेशी आहेत, अनेक लोक आहेत। आता जर योगी आदित्यनाथ वगैरे डेव्हलपिंग करतात, कामं करतात, तर लोकांनी तिथंच थांबावं ना, मुंबईत का यावं। पण विश्वास लोकांना त्यांच्या नेत्यांवर या त्यांच्या स्टेटवरती नाही, त्यांना मुंबईमध्येच येणं आहे। कारण मुंबईमध्येच माणूस सेफ आहे, मुंबईमध्येच रोजगार आहे, मुंबईमध्येच पैसा आहे। जीवन में कुछ करना चाहते हैं मगर यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ कुछ है ही नहीं, बस यही है कि इतना कमाया बस वही खा लिया। जहाँ 2 पैसे बढ़ के मिले, कुछ बना सके अपने लिए, तो कहीं भी हो चले जाएंगे। 2 पैसे बढ़ के मिले, अपना कुछ बना सके, जिंदगी अच्छी हो जाए। जे काही प्रवासी येतात ते अनेक वर्षापासून येत आहेत, म्हणजे 20 ते 25 वर्षापासून जास्त मुंबईला फोकस देत आहेत। ते येतात कुठे? मुंबईला। ते येतात कशासाठी? रोजगारासाठी। मुंबईत हा रोजगार आहे।
मग रोजगार हा कुठून आला? महानगरपालिका ही मुंबईमध्ये आहे आणि ती आहे शिवसेनेच्या ताब्यामध्ये. कामगार सेना एवढी मोठी आहे, जे परप्रांतीय आहेत, मराठी आहेत, मिक्स आहे, सर्व कंट्रीचे. आम्ही त्यांना घेऊन गेलेले आहेत, सोबत आहेत आमच्या, ते आमचे सभासद आहेत. असा कोणीही किती दावा केला पण आम्ही त्यांना समानतेचा दर्जा देतो. भेदभाव तो है, अब बड़ा भेदभाव ये, छोटा मोटा भेदभाव नहीं है, भेदभाव हटना चाहिए. हर जगह फ़र्क है. किधर बीएमसी ऑफिस में चले जाओ, मराठी नहीं आती है ना तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा. चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यूपी का हो, चाहे मद्रासी हो, चाहे बंगाली हो, कोई भी हो. आमचा विरोध बाहेरच्या लोकांना हा नाही आहे की तुम्ही येऊ नका. आमचं हे आहे की आमच्या नोकऱ्या घेऊ नका. आणि मीडिया जे आहेत स्वतःच्या टीआरपीसाठी रंगून दाखवते की आमचा त्यांना विरोध आहे. सवाल पूछने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने, आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है. आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? जब वो शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाए तो ये मुद्दा उनके सामने था कि मैं अपनी राजनीति कैसे चमकाऊं. तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उसी उठाया कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए. First time ever, Mumbai city has seen a shootout inside a public bus. At around 10 a.m., a passenger shot at another person who was sitting inside the bus. So people must have forgotten Mr. Raj, who traveled all the way from Bihar. Okay, and he came here, he wanted to make big in the city, he wanted to have a government job, but at that time there was a propaganda which was made by Mr. Raj Thackeray, wherein he banned people coming from northern state for exams, competitive exams. Mr. Raj allegedly had hijacked the bus. He had held 12 passengers at his camp, and he was holding a revolver, and allegedly he was shot by the police in a shootout. That is what the police story is. But if you see a person who's coming all the way from Bihar just to make his career, he cannot be having a gun in his hand, but then somehow he got hold of a gun. Maybe it was a political, you can say it was a political gameplay wherein unnecessarily an innocent person of 25 years old was killed. आमचा विरोध त्यांना नाही आहे. आमचा विरोध हा आहे की यूपी, बिहार किंवा जी मागासलेली राज्य होती त्यांनी स्वतःचा विकास करावा, जेणेकरून त्यांची जी मुलं आहेत किंवा त्यांचे तरुण आहेत जे नोकरीसाठी येतात ते तिकडेच नोकरीला लागतील आणि आमच्या मुलांना इथे नोकऱ्या मिळतील. There are people coming from outside, there are a lot of people coming from outside to grow here. City is also benefiting. It's not that, yes, the population is increasing, yes, it is causing a lot of shortage of work for the locals as well, but they come here because there's shortage already there in the city. Or so these are the side effects of living in a city which is a metropolitan city and has a lot of resources. People are gonna come to take the resources. So you can't blame per se, and nobody can be stopping them. Because being a lawyer, if I'm saying this, it's because there are laws protecting them. Your own constitution says that you are free to go and work anywhere in your own country. आता माझ्या अनुभवानुसार बऱ्याचपैकी मी जवळपास 70% केसेसमध्ये माझ्याकडे परप्रांतीय आरोपीच परप्रांतीय जे होते त्यांनीच गुन्हे केलेले होते. So I was recently in Arthur Road jail as I am a legal aid panel lawyer. The capacity of the jail is around about 500 people. Inmates can stay there, but then the actual people were staying were 5,600. So that is what I said, 60 to 70% people are migrants. ये मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे हम रहते हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ पर हम रहते हैं, जो अदर स्टेट से जो आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती. इस वजह से क्राइम का जो रेशो है वो उनकी वजह से बढ़ जाता है. The small crime gives rise to the bigger crimes, and slowly the courage which is in the small thief, he becomes a dacoity in no time. Like for example, if today they are able to pick pockets today, then tomorrow they will be picking up mobiles. तो ये बहुत सालों से चलते आ रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा 2 स्टेट जो है वो बहुत चर्चित हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार. Right now I am handling one case called Shubham Shukla, also known as Pikachu, versus state of Maharashtra, wherein there was a person, his friend, he used to do bhaigiri in the area, and
As per Shubham, he says that they used to make videos on YouTube. So both of them were YouTuber also, and they used to do bhaigiri in the area. So one day, both of them, they went near Vashi railway station. Okay, and from the track they walked down where there was their adda. In that adda, they had joined together, and thereafter, person who was with him, who was a hooligan. I mean to say, he used to create ruckus in his area. So he was killed. So allegedly, I mean to say. So he can be seen in the CCTV footage wherein both of them are going together. Now Shubham Shukla is from Uttar Pradesh. He has no background. At the age of 17, he travelled to Mumbai. Because he was not educated, he wanted to do, because of bad influence, he started doing bhaigiri. That is how he became friend to the another bhai who was killed. So now the allegations on Shubham is that he has killed because he was last seen. The minute some amount of pessimism sets in and opportunities are not easily accessible to everyone, people, and more so the youth, do try to look at options that would help them reach their aspirations or achieve their aspirations. These people become the loose points or easy prey to the various nefarious agents that are around. So whether it is drug peddlers, whether it is a very petered down activity of smuggling, moving one product from another area. And when these easy targets even want to move out after the first event of crime has happened, there is no opportunity for counseling. They are soft targets. The things can be manipulated for them. Because they want to survive in the city, they are ready to do everything and anything, whatever you put them on the plate. When they are 15, 16, they are committing crimes on the behest of the dons, or you can say so-called commanders. UP guys are no, bhale you might feel that they are very strong and all, but then they are very humble and soft in nature. I mean to say, naive, you can say, you know, bhale they'll show you that they are very strong and all, but then they are emotionally very much this thing soft. When you are in jail, you need a family support, or you need somebody, you know, who can support, who can say we will get you out of this. Recently there was one case. His mother is a help at one advocate's house in Noida. Her son is lying in a Arthur Road jail. In the Arthur Road jail, he is accused of assaulting 4-year-old girl. So there are POXO charges, there are 376 charges on him, and his mother has been running from pillar to post. She has travelled to Mumbai back and forth 3 to 4 times, but then she does not have that kind of money wherein she can afford a good lawyer or something like that. So right now the case is going on. But then this boy, he claims that he has not done anything. His age is also 16 when he committed an offence. But then just to gain an employment, he had made changes into his Aadhaar card. He had made a duplicate Aadhaar card. So he is a boy who's now 18 or 19. Okay, maybe the offence has been committed after so right now his age is shown on the Aadhaar card is 20. So he is 18. But then he is behind bars. Actually, it should have been a juvenile trial. गुन्हेगार हा परप्रांतातून आला असेल, उदाहरणार्थ तो आसामचा आहे, तो UPचा नेपाळ बॉर्डरवरचा आहे, ओरिसाचा आहे, तर त्यानं इथं ज्यावेळेस कुठं कामाला राहतोय त्यावेळेस त्यानं ॲड्रेस वगैरे जर दिलेला नसेल, जो त्या घरामध्ये घरमालकाकडे राहिलेला आहे तिथं त्यांनी स्वतः डॉक्युमेंट दिलेले नसतील, तर अशा वेळेस असा गुन्हेगार जर गुन्हा केल्यानंतर जर मूळ गावी किंवा परप्रांतात पळून जर गेला तर पोलिसांपुढे खूप आव्हानात्मक परिस्थिती उद्भवते. नहीं, हम लोग को नहीं बनाते राशन कार्ड, भी हम लोग का खुद का रूम नहीं है तो राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग जब कोई मदद भी करना चाहता है तो राशन कार्ड मांगता है, तो हम लोग के पास राशन कार्ड है नहीं, अब पैसा मांगते 10,000 15,000. दादागिरी है और कुछ है, बम्बई वाले का ज़्यादा है. तो मैं खुलाने गई, मेरा खाता नहीं खुला, बोले राशन कार्ड दो, लाइट का बिल दो, एग्रीमेंट दो तब खुलेगा. इसके नाते नहीं, थोड़ा बहुत पैसा मिलने वाला रहा मुझको उधर, वो भी नहीं मिला. बाहेरच्या मुलांना आज तुम्ही म्हणजे गव्हर्नमेंट जॉबसाठी डोमिसाईल इथल्या याच्यासाठी लागतं, पण त्यांना जर सर्वच सर्टिफिकेट आज मिळायला लागली तर इथले मुलं काय करणार, हा पण प्रश्न आहे ना.
A lot of issues are politically created. So definitely this whole synergy between migrants and crimes increasing because of them definitely seems to be created. People have been saying, oh, you know, these migrants come and create problems. But if there is one migrant, there are also 3 non-migrants. So how do you see and judge, how do you create that picture is something that we citizens have to understand. So to say that migrants are, I'm again repeating this, that they are contributing to the crime rate, I think you need to offset it by how much they're contributing to the economic development of the city. एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां. City has a limit. The city cannot go beyond its limit. एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां. हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे. सब जन से ही तो ये बम्बई है और सब चले ही जाएंगे, हर राज्य के लोग चले जाएंगे अपने अपने राज्य में. तो यहाँ की कहानी और यहाँ जो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें, इतनी सुविधाएं, सब खाली पड़ा रह जाएगा. ये लोग नहीं संभाल पाएंगे.